Hello everyone, welcome to the Amthar Academy MCQ meets Mnemonics, and today we are discussing drugs continued and discontinued before the surgery, and this topic is very important and many times tested in the previously asked questions. Yes, so please give note about the audio visual when we'll start. Yes, session is started. Yes, now. The एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वेटिंग पीरियड एंटीप्लेटलेट ड्रग में कितना टाइम रुकना पड़ता है सर्जरी के लिए वो अपन यहाँ पे देखेंगे यस so in the antiplatelet drug you can see the ticlopidine T4 you can remember the 10 day so for ticlopidine you have to wait for at least 10 days 10 to 14 days for the surgery yes so ticlopidine 10 days is there now next clopidogrel. So clopidogrel just 7 days, just 7 days, or you can say 1 week. Yes, so 1 week clopidogrel, or for you can say 1 week, 1 week. So you have to wait for the 1 week. Now next is abciximab. Abciximab. So how you can understood this when you write this A and B. Yes, when you write this A and B, so you can easily derive the 4 from the A and 8 from this B. So you can say this is 48. This is 48. So abciximab when you write the when you write the A यहाँ से अपन आसानी से 4 निकाल सकते हैं. Yes, this is 4 and from the B you can derive the 8 so 48 hours. Yes, please remember this is hour 48 hours 48 hours for the abciximab. Now aptifevatide E for aptifevatide or E for you can remember 8. Yes, EIGST 8 hours. Yes, so E for aptifevatide and E for the 8 hours. Yes. Yes, Dr. Midush Prasant. We will discussing this either continued or discontinued in the upcoming slides. Yes. So now the antiplatelet drugs में क्या पढ़ा अपन ने टिक्लोपिडिन 10 days और you can remember T for 2 weeks means the 14 days and clopidogrel O आता है O for 1 week so you can say 7 days is there and you can also remember yes abciximab A and B so 48 hours aptifevatide E for you can remember the 8 hours. Yes, now anticoagulant minimum interval between last dose and the surgery. Yes, so warfarin 4 days. So how we can remember? You can remember this var and char. Yes, var and char. You can remember the var and char is pronouncing the same. Var and char is rhyming. So var को कब रोकना है जब चार हो जाए वार चार मीन्स 4 सो यू कैन से 4 days बिफोर दी सर्जरी so वारफेरिन कब बंद करेंगे 4 दिन पहले unfractionated heparin and the low molecular heparin so you can say unfractionated heparin is a bigger heparin or you can say the bigger spelling so you have to adjust with the smaller number and low molecular weight heparin is the small spelling or the or the लो वेट सो यू हैव टू एडजस्ट विद द बिगर नंबर यस छोटे के साथ बड़ा छोटे वर्ड के साथ बड़ा नंबर लिखेंगे बड़े नंबर के साथ छोटा नंबर लिखेंगे तो ऐसे आप इस चीज को यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं सो यू कैन से यहाँ पे जब अपन ने देखा अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन काफी बड़ा नंबर है तो यहाँ पे छोटा छोटा नंबर लिखेंगे 6 आवर्स यस एंड लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन यहाँ पे क्या है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन छोटा वर्ड है लो मोलिक्यूल मतलब छोटा तो उसके साथ बड़ा नंबर लिखेंगे दैट इज 12 एंड 24. Yes, so you have to adjust the smaller spelling with the bigger spelling with the shorter number. Yes, so you can say unfractionated heparin 6 hours and low molecular weight heparin for prophylactic use 12 hours, for therapeutic use 24 hours. So you can say T for therapeutic use to T for 24 hours. Yes, 24 and T for therapeutic use. Therapeutic use. यस दूसरा कैसे याद किया अपन ने द स्मॉल यस स्मॉलर स्पेलिंग विद बिगर नंबर यस एंड द बिगर स्पेलिंग with smaller number with small number yes so in this way you can correlate now so duration before the discontinuation so you can say short acting insulin should be discontinued but the when insulin given by the continuous infusion pump that may be continued so यहाँ पे देखेंगे नाम में आ रहा है continuous pump so continuous pump is continued
is continued. Yes, so short acting insulin is just discontinued, but when is given by the continuous pump, it is continued. So continuous, continued. You can remember. Now, thienpyridine like clopidogrel, ticlopidine, we already discussed. Clopidogrel 1 week, ticlopidine 10 days, or you can say 2 weeks. So yes, we already say 2 week, or you can say 14 days, और you can remember T for the 10, तो 10 days before अपन इसको बंद करते हैं. Yes, clopidogrel O for you can say 1 week, 1 week मतलब 7 days, 5 to 7 days. Yes. Now, so except in cataract surgery, patient with metallic or drug elutant stent, we continue this clopidogrel and ticlopidine. So how we can relate this cataract surgery? So C for cataract surgery, C for continue. C for continue, C for clopidogrel, or you can say ticlopidine. Yes. So in the cataract surgery, जो सी वाली ड्रग है वो क्लोपिडोग्रेल टिक्लोपिडिन में सी आता है, ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी. यस, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. नाउ, सो एस्पिरिन शुड बी डिसकंटिन्यूड 3 days बिफोर द सर्जरी एक्सेप्ट इन द पीसीआई or the coronary artery disease or stroke, because this is high risk condition, there is a high mortality, so we continued. यस, सो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क रहती है, सो यहाँ पे अपन एस्पिरिन को कंटिन्यू करेंगे. नाउ माओ इनहिबिटर, so you can say 2 week before the surgery we have to stop MAO inhibitor, so MA or 0. So MAO inhibitor में कितने लेटर आते हैं 1 and 2, so you can say 2 week before the surgery. So MAO inhibitor, monoamine oxidase inhibitor, discontinue 2 week prior to the surgery. Yes, what is the example of the MAO inhibitor? Type in the chat box which is the selective, it is the non-selective MAO inhibitor, which is for the MAO A, which is for the MAO B, and which is the non-selective. Yes, non-selective क्या होते हैं, क्या निमोनिक बताया था, पिट. यस, टिपिया पिट बताया था, टर्नेल साप्रामाइड. यस, आइसोकार्बोक्सामाइड. डिस्कनेक्टेड, what is disconnected? Yes, its session is disconnected. Yes, session is disconnected. Now, so next you can say topical medicine. So topical medicine discontinue on the day of the surgery. So you can say T for topical medicine, T for the day of the surgery. Yes. So let me check what is happening to the session. Yes. So topical medicine, T for topical, T for the day of the surgery. Yes, day of the surgery. So यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन? T for topical medicine, or O for on the day of the surgery. Yes, in this way you can remember. Yes. Now next is diuretic. So diuretic you can remember D for D. This session is connected. I think somebody say session is disconnected. Yes, please. Session is connected or not? Yes. So you can say topical. Yes, to topical medicine, T for the topical medicine on the day of the surgery, we have to discontinue. Now, diuretic, you can remember D for diuretic or D for discontinue. Diuretic को discontinue करना पड़ेगा, but thiazide को अपन दे सकते हैं. Yes, but we can give the thiazide. Yes, yes. So, यस. सो नाउ थायराइड को अपन यहाँ पे दे सकते हैं. सो डी फॉर डायरेटिक, डी फॉर डिसकंटिन्यू, बट द थायराइड कैन बी कंटिन्यू. यस, थायराइड ऐसा कैसे थमा रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. नाउ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिसकंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ द सर्जरी. यस, एंड पेशेंट मस्ट बी रिप्लेस ऑन द इंसुलिन, शिफ्टेड ऑन द इंसुलिन. सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स एजेंट से उसको इंसुलिन पर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क रहता है. यस, there may be more hypoglycemic risk by the oral
hypoglycemic agent, so we shifted on the insulin because insulin can be titrated. So oral hypoglycemic agent, you can remember O4 on the day of the surgery, discontinue करते हैं. Sildenafil इसको 20 आवर 24 आवर पहले बंद करेंगे. So sildenafil S4 you can remember single day. So single day before means that 24 आवर before इसको बंद करना है. Yes. So नाइट्रेट के साथ भी इसको 24 आवर पहले बंद करते हैं. यस. एंड टाडानाफिल और नाइट्रेट में कितना गैप रहता है? यस, कमेंट सेक्शन में बताएंगे. टाडानाफिल एंड नाइट्रेट में कितना गैप रहता है? यस, दोनों में गैप रहता है 4 to 5 days का. Yes. Now next, you can say NSAID. NSAID should be stopped 48 hours before the surgery. Means the 2 days. So NSAID you can say D4. You can say दो दिन means the 2 days. Now warfarin we already discussed. Var is char. So char means 4. So 4 days before the surgery it should be stopped. But except in patient having the cataract surgery without the bulbar block. So how we can remember cataract surgery, C4 cataract, C4 continued. So we already discussed this, C4 cataract, C4 continued. Now drug can be continued on the day of the surgery. So कौन कौन सी drug है जो continue यहाँ पे रहेगी? So all the chronic drug, all the chronic drugs, all the life-saving drugs, yes, are continued. So you can say which is the chronic disease like convulsion, patient have to take the medicine lifetime. Yes, for the asthma, patient have to take medicine lifetime. And you can say yes. नेक्स्ट फॉर हाइपरटेंशन, पेशेंट को लाइफ टाइम हाइपरटेंशन की मेडिसिन यहाँ पे लेनी पड़ेगी. सो नाउ कार्डियक मेडिसिन आफ्टर द एपिसोड ऑफ द कार्डियक डिजीजेस पेशेंट और शिफ्टेड ऑन द यस दिस फॉर द लाइफ टाइम. नाउ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एक बार किसी की डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाई शुरू हो जाती है तो वो भी वहाँ पे लगातार चलती है. स्टेटिन शुड बी स्टैटिक फॉर द कंटिन्यूशन. लीवोडोपा को लेते रहना है, रुकना नहीं है, लेते रहना है. सो लीवोडोपा को लेते रहना है. यस. माओ इनिबिटर को भी 2 वीक पहले बंद करते हैं, बट यदि एनेस्थेटिक कंफर्टेबल है तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं. यस. सो माओ इनिबिटर्स आर कंटिन्यूड व्हेन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आर कंफर्टेबल विद द यूज ऑफ द माओ इनिबिटर and possibility of the exacerbation or disarray of the depressive syndrome because this antidepressant cannot be stopped suddenly. They have to taper. इसको taper करना चाहिए. If you stop suddenly the antidepressant, antipsychotic, they may precipitate the withdrawals. Yes. So if there are any chances of the withdrawal, any chances of the precipitation of the depression, we have to continue this medication. Yes. So drug can be continued on the day of the surgery. The drug which patient take the lifelong treatment like convulsion, hypertension, asthma, yes, depression, anxiety, and the hyperdyslipidemia, statins, yes, Parkinson means the levodopa, you can say yes. So levodopa ko lete rehna. Statin should be static for the course, do not stop. Yes, you can remember. Now narcotics भी लेते रहना है, heartburn and eye drops वाली चीजें भी आपको लेते रहना पड़ेगा. Yes, thyroid medication patient have to take for the lifelong, so this also continued. So in this way you can remember. Yes. तो नाउ मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था जिसमें अपन ने पढ़ा था द ड्रग्स कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग, yes, short post antibiotic effect and a long post antibiotic effect. This session is discussed in the morning. Yes. Now yes, so you can say मॉर्निंग में सेशन देखा था और जिन्होंने भी फ्लैश कार्ड सबमिट किया है उनको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दी गई है. यस, यू कैन सबमिट द फ्लैश कार्ड एंड यू विल रिसीव द recording of this session. Yes. So thanks for the participation. Keep revising.